Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine and feeling good. Once again, I'm here, and today again I've selected a poem from KPK textbook. I'm talking about English book, and today I will discuss another poem that is written by Douglas Malloch. So let's talk about Douglas Malloch. He is an American poet and a story writer. He wrote so many beautiful poems. If I talk about his famous poem, that is "Be the Best of Whatever You Are," it's an amazing poem. Maybe tomorrow I will discuss "Be the Best of Whatever You Are," but today I'm talking about "Good Timber." There is also an extremely amazing poem by Douglas Malloch, right? So Douglas Malloch is an American poet, and remember, in this poem he says that hard work and struggle, self-belief, motivation, there is extremely nice things, right? There is a kind of theme of this poem as well, because without hard work people cannot get success in. There will be no success without hard work, because I myself, I believe in hard work, and I myself am a hard worker person, and hard work really pays off. I just remind an inventor, there is Thomas Edison, and you people will know better about Thomas Edison. um, he struggled hard to invent, to make a bulb, right, a light bulb, and he attempt 1000 unsuccessful experiments, and finally he came up with a successful experiment, and he invent a light bulb, right? So do you know what was his final statement? He said that success is 90% perspiration and only 10% inspiration, right? So 90% a person should work hard, so that we can get success, right, in our life. And there is another thing, and you know that in Quran, Allah says in Quran that innama al usri yusra, after every difficulty there is relief. In simple words, we say no pain no gain, right? So that hard work really pays off, right? So in this poem, in Good Timber, the title of this poem is Good Timber, right? And is on page number 25, right, in KPK textbook. So in this poem, uh, there is a metaphorical poem, right? Because there are so many metaphors, right, in extended metaphors, because Douglas Malloch compares trees to men, right? There is the main thing is that in this poem that he compares trees to men, right? Well, there is called extended metaphor. In the first two stanzas, the poet compares trees to men to achieve something without taking any pain, right? So if there is any pain and people achieve something really important, so he says that these people, they're useless. And if a person is working hard, right, and they are facing challenges, problem, hardships, right, and so many things, so he says that the Douglas Malloch consider them that they are the king of they are the king of mountains, they are the king of hills, right? He himself believe in hard work. Now I have some notes here, that he says that such trees uh, and men are of no use to society. That if a person does not work properly, if for example there are some people, and those people, they don't work hard to get success, right? So Douglas Malloch says that they are of no use to society. It means that उन लोगों से सोसाइटी को, उन लोगों से तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो वो अपने लिए कोई फ़ायदे के लिए कुछ करता है, और ना वो उस उनसे मतलब किसी और को फ़ायदा मिलता है, राइट? सो दीज़ ट्रीज़ नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग। नाउ यहाँ पे ट्रीज़ तो, एज़ आई टोल्ड यू दैट इट इज़ कॉल्ड ए मेटाफर, कि ट्रीज़ को इंसानों के साथ कंपेयर किया है उसने. These were some main lines from the poem. Now let's talk about it. Let's go for the proper translation of this poem. Right. So first of all, I need to tell you, now open your book on pen. This is called first year English book, right? And open your book. Those who wants to study literature in
or those who are in second or first year, right? So open your book on page number 25 and let's talk about it. So good timber, now literally it means in Urdu अच्छी लकड़ी, right? वो लकड़ी जो काबिल इस्तेमाल हो, ओके। क्योंकि टेम्बर मीन वुड, ओके, लेकिन उसमें जो शाखें नहीं हो ना उसमें जो पत्ते वगैरह हो, वो लड़के जो हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं ना जो वो टेम्बर होते हैं, लेकिन ये एक मेटाफोरिकल वर्ड है, ओके, और ये इंसानों के लिए उसने इस्तेमाल किया है। सो अभी जब हम इस पोम को रीड आउट करके तो हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, so let's go for the translation of this poem. Well, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोम है, सो इसका हक बनता है कि मैं उसको म्यूज़िकल साउंड में और इसमें जो प्रॉपर जो जो राइमिंग स्कीम है तो वो भी बड़ी खूबसूरत है। सो लेट मी रीड आउट दिस पोम, राइट? The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cool by rain and snow, in trees and men good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Now there are so many beautiful rhyming scheme here. This is why it needs to be in a proper way. I mean that I sung this one in a musical sound as well. Now let's talk about the translation of this poem. Douglas Malloch says that the tree that never had to fight, वो दरख्त जिसने कभी कोशिश नहीं की, राइट? नाउ दरख्त कोशिश नहीं करते, सो यहाँ पे फाइट का लफ्ज आया है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड personification in poetic device, right? Literary device. This is called what? Personification. So the trees that never had to fight, वो दरख्त जिसने कभी भी मेहनत नहीं की, कभी भी कोशिश नहीं की, for sun and sky and air and light, धूप, आसमान, हवा और रोशनी के लिए, मतलब ये जो बेसिक नीड्स होते हैं और ये इंसानों के लिए भी होते हैं और ये ट्रीज के लिए भी होता है। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि धूप और आसमान, हवा और रोशनी के लिए जिस दरख्त ने मेहनत नहीं की और जिस दरख्त ने कोशिश नहीं की, बट स्टूड आउट इन ओपन प्लेन, बल्कि वो खुले और हमवार मैदान में खड़ी रही। सही था? नाउ इट्स ओके। यहाँ देखो प्लेन के साथ ना कोई इन्वर्टेड कॉमा है, ना कॉमा है और ना फुल स्टॉप है। तो इसी तरह जो 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 पोम में लाइंस होता है तो उसको कहते हैं ना एंजम्पमेंट, क्योंकि ये दूसरी लाइंस के साथ कनेक्ट होता है विदाउट एनी फुल स्टॉप और विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा, राइट? सो यहाँ पे वो कहता है कि बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, बल्कि वो खुले और हमवार मैदान में खड़ी रही। जो दरख्त वो खुले और हमवार मैदान में खड़ी रही और उसने कोशिश नहीं की तो वो यूजलेस है। मतलब जिस इंसान ने इस ज़िंदगी में तरक्की के लिए और कामयाबी के लिए कोशिश नहीं की तो वो यूजलेस है, वो बेकार है, अकॉर्डिंग टू डॉगलस मेलक, राइट? और ये तो हकीकत है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज एंड ऑलवेज गॉट इट शेयर ऑफ रेन, और हमेशा उसने अपने हिस्से की बारिश हासिल की। मतलब उसके साथ अगर अच्छा होता है तो वो भी ठीक है, अगर बुरा होता है तो वो भी ठीक है, लेकिन जिस इंसान ने अपने हक के लिए जो इंसान अपने हक के लिए नहीं लड़ा तो वो अकॉर्डिंग टू डगलस मेलक ही इज ए यूजलेस पर्सन, राइट? एंड ही इज ऑफ नो यूज टू सोसाइटी, उससे सोसाइटी को भी कोई फायदा नहीं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, तो वो दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बना। इट मीन्स के वो शख्स, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, बिकॉज Douglas Malloch, he compares trees to men. This is why I call it a metaphor, right? तो यहाँ पे तो बात trees की हो रही है, असल में ये इंसानों को बताते हैं,
ओके, सो नेवर बिकेम ए फॉरेस्ट किंग, तो वो कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बना, बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग. स्क्रबी थिंग मीन inferior in size, right? So as we know that here we are talking about trees, and trees are being compared with human being, right? So but lived and died a scrubby thing, बल्कि वो एक बेकार और मामूली सी चीज़ की तरह जिंदा रहकर मर गई. इट मीन्स दैट अगर एक इंसान यहाँ दुनिया में रहा और उसने तरक्की नहीं की, ओके, और उसने कामयाबी हासिल नहीं की, तो वो वैसे ही बेकार और मामूली चीज़, या मामूली मतलब अपनी उम्र यहाँ पे गुजार कर वो मर गया, राइट? तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो उसने खुद तरक्की की और ना दूसरों को कुछ फ़ायदा पहुँचाया. Okay, so this is why in the first line I talked about hard work and struggle and self-belief and motivation are really important. These are the theme of this poem. Now in the next stanza, Douglas Malloch says that the man who never had to toil mean मेहनत करना. Okay, so the man who never had to toil, वो इंसान जिसने कभी मेहनत नहीं की, to gain and farm his patch of soil, कि वो अपनी ज़मीन को हासिल करके उसमें खेत बनाए. मतलब जिस इंसान ने अपने ही ज़मीन में काम नहीं किया और उसमें मेहनत नहीं किया, ओके, who never had to wish his share, सॉरी टू विन हिज शेयर, हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसने अपनी हिस्सा हासिल करके हासिल करने की कोशिश भी नहीं किया. ओके, मतलब जिसने अपनी हक के लिए भी जो शख्स नहीं लड़ा और अपना हिस्सा भी हासिल नहीं किया. ओके, ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइन एंड ईयर, धूप, हवा और रोशनी और उसका जो 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 आसमान का हिस्सा है, मतलब दे आर द बेसिक नीड ऑफ दिस लाइफ, राइट? सो यहाँ पे वो कहता है कि जो ट्री है और उसने धूप भी हासिल नहीं किया, ना उसने हवाएं हासिल की, मतलब ग्रूमिंग के लिए. ओके, तो नेवर बिकेम अ मैनली मैन, तो एक बहादुर इंसान नहीं बना, कभी भी एक बहादुर इंसान वो नहीं बना. वो इंसान कभी भी एक जो मैनली मैन होता है ना, जो परफेक्ट होता है, राइट, जो मुकम्मल इंसान, या यू कैन से दैट बहादुर इंसान, दलेर इंसान, तो वो कभी नहीं बना. मतलब जिसने ये सब कुछ हासिल नहीं किया, अपनी तरक्की के लिए उसने कोशिश नहीं की, तो एक बेकार इंसान है और वो कभी भी जंगल का बादशाह नहीं. इट मीन्स कि वो कभी भी कामयाब इंसान नहीं बना. इट मीन्स दैट डॉगलस मेलक believes in hard work and he does not believe in luck, right? But lived and died as he began, बल्कि वो जिंदा रहकर तरक्की के बगैर मरता है. It means that जो इंसान जिंदा रहकर तरक्की के बगैर मरता है, तो किसी का नहीं, वो बस वो बेकार होता है, मामूली सा होता है, ना वो अपने लिए कुछ कर पाया, ना किसी दूसरे इंसान को फायदा पहुंचाया. Now let's talk about the next stanza, number third stanza. Good timbers does not grow with ease, राइट? अच्छी लकड़ी आसानी से नहीं उगती, मतलब नहीं बढ़ती, यानी कामयाबी आसानी से नहीं आती इंसान के लिए. As I told you again, I'm talking about metaphor that timber is being compared with men, right, with human beings. So in this sentence he says that good timbers does not grow with ease, अच्छी लकड़ी वो आसानी से नहीं बढ़ती, राइट, या आसानी से वो नहीं उगती. द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, और जितना ज़्यादा सख्त हवाएं हो या तूफान हो, राइट, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, तो इतना ज़्यादा वो ताकतवर दरख्त होगी. इट मीन्स कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त किए हो, तो उतना ही वो कामयाब बन जाता है, राइट, बिकॉज विदाउट हर्क देयर इज़ नो सक्सेस. तो जितना ज़्यादा लोग वो तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, तो उतना ज़्यादा वो कामयाबी के राहों पर गामजन हो जाते हैं. ओके, और द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, और जितना वो आसमान दूर होगा, द ग्रेटर लेंथ, तो उतनी ही उस दरख्त की लंबाई होगी, राइट. मतलब जितना इंसान से वो कामयाबी दूर होगी, तो इतना ज़्यादा इंसान मेहनत करेगा और फिर वो कामयाब बन जाएगा. Okay, now let me give you the example of this sentence. For example, if I get a teaching post after 10th class, right, after matriculated, so definitely मैं इतना ज़्यादा काबिल नहीं होऊंगा. और if a person get this job, the same job after 16-year education, I mean after master, so definitely he will be very intelligent than me. तो यहाँ पे वो poet भी कहता है कि द फर्दर स्काई, जब आसमान जितना ज़्यादा दूर होगा, द ग्रेटर लेंथ, तो उस दरख्त की लंबाई भी इतनी ज़्यादा होगी. नाउ द नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट बाय सन एंड कूल्ड, के धूप और सर्दी के ज़रिए, बाय रेन एंड स्नो और बारिश और बर्फ़ के ज़रिए, मतलब ये भी एक बेसिक नीड्स होते हैं.
ओके, इन ट्रीज एंड मेन गुड टेम्पर्स ग्रो, दरख्तों और इंसानों में जो अच्छी लकड़ी होती है तो वो पैदा होती है, राइट। यहाँ पे वो कहता है कि ना, यहाँ पे वो कहता है कि गुड टेम्पर को यानी अच्छा, लेट मी टॉक अबाउट बाई सन एंड कूल, धूप और सर्दी के ज़रिए, मतलब ये भी दरख्तों के लिए चाहिए होती है। बाई रेन एंड स्नो, और बारिश और बर्फ़ के ज़रिए। इन ट्रीज द मेन एंड मेन गुड टेम्पर्स ग्रो, दरख्तों और इंसानों में अच्छी इमारती लकड़ियाँ पैदा होती है, मतलब अच्छी खसूसियात वाली लकड़ी पैदा होती है इन इन forest, right, and in human being as well. Okay, now let's talk about the next stanza, the final stanza. Where thickest lies the forest growth, जहाँ जंगल ज्यादा घना होता है, यानी जंगल ज्यादा जब ज्यादा घना होता है, वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ, पेट्रियार्क्स मीन जो मेल लीडर होता है किसी सोसाइटी की, तो उसको कहते हैं ना पेट्रियार्क्स। और वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ, तो वहाँ पर वो बड़े बुजुर्ग दरख्त होते हैं। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स इन दिस पोएम, राइट। ही सेज दैट वियर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जब जंगल ज़्यादा घना होता है तो उसमें मतलब मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे इंसानों के लिए भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल 100 पोस्ट है जॉब के लिए, और यहाँ पे है 1000 लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे एक इमर्जिंग स्टार होता है, या फॉर एग्जांपल इसमें है पोस्ट एक है, राइट। और जो कैंडिडेट्स है वो तकरीबन 10 है, तो इसमें एक होता है ना इमर्जिंग स्टार, तो कंपटीशन के लिए यहाँ पे वो कंपटीशन करके वो इमर्ज होता है फिर सोसाइटी में। तो जब जंगल ज़्यादा घना होता है और उसमें एक दरख्त है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक गुड टेम्पर उससे उससे बनता है ना, तो वो कहता है कि यह इससे मतलब ये ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं कि जब मुआशरे में लोग ज़्यादा हो और इसमें एक शख्स तरक्की करता है, कामयाब बन जाता है, तो इसका मिसाल भी ऐसा है कि एक दरख्त है और वो घने जंगल में है, और वो तरक्की करता है, राइट। एंड दे होल्ड कॉन्सल विद द स्टार्स, और वो सितारों से मशवरे करते हैं या बात करते हैं, राइट। तो जब इंसान कामयाब होता है तो फिर सितारों से वो क्या करता है कि सितारों से फिर वो बात करता है, कॉन्सल करता है या मशवरे करता है, राइट। और फिर कहता है कि हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, और द स्केर्स मीन जख्म के निशानात को क्या कहते हैं, स्केर्स कहते हैं, राइट। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, और जिनके टूटे हुए शाखे जख्मों से भरे होते हैं। इट मीन्स दैट ओनली द wearer knows where the show pinches, right. For example, as I told you in the beginning of this poem, कि जो बंदा ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करते हैं तो वो कामयाब बन जाता है। So whose broken branches show the scars, जिनके टूटे हुए शाखे ज़ख्मों से भरे होते हैं। और of many winds and much of strife, स्ट्राइव कहते हैं ना फसाद या झगड़े को, तो ऑफ मेनी इवेंट्स एंड मच ऑफ स्ट्राइव, और बहुत से तूफानों के साथ वो क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। यानी इंसान तरक्की के लिए बहुत से तूफानों से गुजर कर फिर वो तरक्की के राह पर आते हैं और कामयाब बन जाते हैं। एंड दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, और ये ज़िंदगी के एक आम कानून है। यानी ज़िंदगी की एक आम कानून ये है कि जो बंदा ज़्यादा मेहनत करता है तो वो ज़्यादा वो कामयाब बन जाता है और तरक्की के राहों पर आते हैं। तो जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त की हो तो वो फिर सितारों के साथ बातें भी कर सकता है, राइट। और जिसने अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा मेहनत किया तो वो उतना ही कामयाब इंसान बन जाता है। I hope that you have enjoyed this lecture, and I will try to keep this attempts. I mean, I'm trying to discuss all the course of first year and second year. And inshallah, see you next time. Subscribe to my YouTube channel, and click the bell icon for the no notification. Right? Thank you very much.